Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Business Economics ECU 400 के lecture number 20 में खुश आमदीद. So as you know that we started to discuss the relationship between money and inflation, the two very important parameters of an economy. So we have discussed the first part of that relationship between money and inflation in the last lecture, lecture number 19. तो सबसे पहले थोड़ा से उस लेक्चर पे बात करेंगे, वे उसको रिवाइज करेंगे and then we'll go to the second part of money and inflation. Now so what we have learned in the previous lecture, so we talked about the money. The money is the stock of assets used for transactions. Then we have discussed that money has three functions that it can perform. First function, that money as a medium of exchange. You can use money for the exchange of goods and services within the country and between the countries also. A second function of the money was store of value. Money can be used as a store of value. And the third function that we have discussed last time was the money can be used as a unit of account. उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ मनी की एंड हमने कहा कि दो किस्म की मनी होती है इकोनॉमी में, fiat money and the commodity money. Now what is the difference between these two types of money? Fiat money is that money which has some intrinsic value, which has no intrinsic value, like if we talk about paper money, so such type of money is known as the fiat money in the economy. Second is the commodity money. Now commodity money is that money which has some intrinsic value, like if we say that gold, for example, is a type of money which has some intrinsic value. So उसके बाद हमने बात की that we talked about money supply and monetary policy. Money supply is the quantity of money available in the economy, and monetary policy is a tool which the government or the federal government, Fed, or the Central Bank of Pakistan, which is the State Bank of Pakistan, can use to control the money supply in the economy. So that is how we can link up the money supply and monetary policy. So monetary policy is the tool which is used by the government, by the federal bank, which is the State Bank of Pakistan, to regulate money supply in the economy. जिससे कि हमने देखा कि government can adopt expansionary monetary policy as well as contractionary monetary policy. So it depends if government needs to print more money or if they want to increase money supply in the economy, then they adopt expansionary monetary policy. But if the government want to reduce money supply in the economy, then they adopt contractionary monetary policy, right? So money supply, by which they can, or the government can control money supply in the economy, reduce money supply in the economy. उसके बाद हमने बात की quantity theory of money की. We have tried to develop the one-to-one relationship between inflation and growth rate of money supply, right? So we, with the help of QTM, with the help of quantity theory of money, which was given by Milton Friedman. So he gave this theory and he said that money supply, inflation is the cause because of the money supply, growth in money supply, right? So whenever there is increase in money supply, price level in the country will go up. Whenever money supply goes down, prices will go down also, right? So we have developed an equation known as the QTM identity, which was MV is equal to PY. That is the quantity theory of money equation. So then we concluded with the help of QTM, we said that the growth rate, the money growth rate determines the inflation rate, right? So whenever there is a change in the level of money supply in the economy, that affect the inflation rate in the economy, right? So this was all about which we have learned in the previous lecture.
Now we'll talk about what we are going. We continue with the same topic in today's lecture, that is money and inflation. How we can go further in explaining the relationship between inflation and money. So we'll continue with the same topic in today's lecture. और आज हम बात करेंगे seigniorage की, right? Seigniorage, and then we'll talk about Fisher effect, and then we'll talk about link up the money demand with the nominal interest rate. As we know that before, we said that money demand only जो है output, money demand is determined by the output in the economy only, but here we'll see another determinant of money demand, which is the nominal interest rate. उसके बारे में हम बात करेंगे, and finally we'll talk about the cost of inflation. What kind of cost of inflation an economy or society has to pay if the price level in the country is going up, right? So these are few things that we would like to discuss in today's class. आज के lecture में हम बात करेंगे. We'll start with the first part of the lecture, which is seigniorage. Now, as we know that in the economy, the government has to do a lot of expenditures, right? So as we already discussed that there are two sorts of government expenditure. One is the development expenditure, the other is non-development expenditure, right? So government has to pay to finance their expenditure through income received from the taxes, different kind of taxes and the economy, right? So but sometimes the spending, when the spending of the government is more than the revenue generated from the taxes, right? So then the government need to finance that increase in spending as compared to taxes, right? Now how government, किस तरह से government उस को finance करती है, how they finance that particular increase in government expenditure which is not met by the revenue from the taxes. तो उस चीज़ के लिए जब गवर्नमेंट जो है in order to raise its revenue, अपना revenue बढ़ाने के लिए to spend more without raising taxes or selling bond, the government cannot raise their revenue by selling bonds or by increasing taxes, and the government can do can print money to raise their revenue. In that case, that sort of situation is known as seigniorage, right? So when we say that the government के खर्चे बढ़ गए हैं, spending of the government has increased, now then the revenue generated from the taxes are which government is collecting from different sources. तो जब उसके expenditures बढ़ जाते हैं और हम कहते हैं कि those expenditure cannot be met by the taxes, revenue cannot be increased by taxes or selling bond, government के पास option जो रह जाती है only to raise revenue is to print money, right? To increase the money supply in the economy. तो जब government अपना revenue बढ़ाने के लिए नोट प्रिंट करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है, तो इस सूरत हाल को we can say that there is a seigniorage in the economy, right? The revenue raised from your printing money is called seigniorage, right? So this kind of so this is the phenomenon, this is the parameter जिसको हम seigniorage कहते हैं कि जब गवर्नमेंट अपना revenue बढ़ाती है in order to meet their expenditure or spending with by printing money in the economy. So that sort of situation is known as seigniorage. Now inflation tax की बात हम करेंगे. We'll talk about inflation tax, and it's not printing money to raise revenue is a cause of inflation. So as we know that when the government prints more money, so there it leads towards inflation in the economy. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि in quantity theory of money QTM में हमने बात की थी कि जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं और इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, राइट? सो इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है एज ए लाइक टैक्स. इट्स नॉट इस टैक्स, ये ऐसा टैक्स है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो नहीं मिलता, बट ऑफ कोर्स दैट raise in prices is paid by the individual or the people who hold money with themselves, right? So it's considered that inflation is a type of or kind of tax on the individuals, on the society, in the economy when there is increase in the price level in the country.
Now, to explain, to continue with further, explain this further, inflation tax are the rise in prices due to printing of money or increasing money supply. We need to discuss the relationship between inflation and interest rate. तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को आपस में लिंक अप कर सकते हैं, राइट। तो उस चीज़ के लिए एज वी नो दैट दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं इकोनॉमी में। वन इज़ नोन एज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विच इज़ डिनोटेड बाय आई. This is not adjusted for the inflation. The other sort of inflation interest rate is the real interest rate, which is denoted by R, and this is the rate of interest which is adjusted for the inflation, right? So we can say that nominal interest rate is equal to the real interest rate. Real interest rate is equal to the nominal interest rate minus pi. As we know that in the previous lecture हमने ये कहा था कि pi is used for inflation, right? So when we are going to relate these two concepts, the relationship between inflation and इंटरेस्ट रेट, तो हमने ये कहा कि दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं इकोनॉमी में, नॉमिनल एंड रियल. नॉमिनल क्या इंटरेस्ट रेट है कि विच इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, राइट? सो and the real interest rate is that inflation rate, interest rate which is adjusted for the inflation. जैसा कि हमने कहा कि we use I for nominal interest rate and small r for the real interest rate. So with this definition we can write it down that real interest rate is equal to nominal interest rate minus inflation. Now if we rearrange this equation, we can get the nominal interest rate will always be equal to the real interest rate plus inflation in the economy. Now as we know that in the long run there is no change in real variables, right? Here R is the real interest rate in the economy, right? So the job or the purpose of R is to determine equilibrium in the market by equating saving is equal to investment. So real interest rate is determined at the point where we say that in economy saving is equal to investment, जहाँ पे saving और investment बराबर होती हैं. So that point determines the interest rate in the economy. So in the long run R, small r, cannot be changed, cannot be affected. So by this assumption, by this fact, we can say that in this equation जो कि आपको नज़र आ रही है, there is 1-to-1 relationship between the nominal interest rate and the inflation rate. जब हम long run की बात करते हैं इकोनॉमी में तो real variable change नहीं होते. So हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में then there is 1-to-1 relationship between I, which is nominal interest rate, and pi, which is inflation rate. And this 1-to-1 relationship is known as a Fisher effect. Irving Fisher was an economist who has given this relationship between the nominal interest rate and inflation rate set. He said that whenever, now suppose if we say that the nominal whenever there is increase in the nominal interest rate in the economy, in the country, so what will happen? Inflation को क्या होगा? Inflation जो है कम हो जाएगी, right? So there is a negative relationship between so there is a positive relationship between nominal interest rate and there is a positive relationship between nominal interest rate and the inflation rate in the economy. Whenever there is increase in the inflation in the country, जब inflation होता है इकोनॉमी में तो क्या होगा? जब prices बढ़ती हैं तो normally people want to there will be an equal increase in nominal interest rate in the economy, right? So जब prices बढ़ेंगी तो people prefer to hold money with themselves, right? So the government or the banks want to encourage people to deposit or put their money in the banks by raising the nominal interest rate. So we can say that with the increase in price level or in the inflation in the country, this will lead to increase in the
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन रेट के साथ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और दिस वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन इज नोन एज द फिशर इफेक्ट. Now, as we know that there are we'll talk about there are two sorts of real interest rate in the economy. उनकी बात करेंगे. अभी तक हमने बात की that there is only one real interest rate. Actually, there are two sorts of real interest rate in the economy, and how we can differentiate between those two real interest rate, so that can be differentiated by looking at the inflation rate. As we know that we have two different inflation rate in the economy. Pi is equal to the inflation rate which is actual inflation rate in the economy. Pi not known until after it has occurred. So we don't know what would be the inflation rate in the coming month or the coming year until it happened, right? तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितना एक्चुअल इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में unless it happened or occurred in the economy, right? Pi E is the expected inflation. ये ऐसा इन्फ्लेशन है कि जिनके बारे में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर अगले साल अगले 6 महीने या नेक्स्ट ईयर this would be the inflation rate in the economy. So we have two different inflation in the country or in the economy. One is the actual inflation जिसको हम pi से डिनोट करते हैं. The other is expected inflation, right? So because of these two different inflation rate in the economy, we have two different interest rate in the economy. One is the two different real interest rate. Pi, first one is the difference between I minus pi E, which is the ex ante real interest rate. What people expect at the time they buy a bond or take out a loan, right? So what would be the interest rate in the economy? That is ex ante real interest rate, because it is depending on the expected inflation, right? So people are expecting that in future or in coming years this would be the inflation rate, right? So ex ante real interest rate would be what people are expecting at the time when they are going to buy a bond or getting loan from the bank. Second real interest rate is the ex post real interest rate, and which is the difference between a nominal interest rate and actual inflation in the economy. This is what people actually end up earning on their bond or paying on their loan, right? So जैसा कि हमने देखा कि there are two real interest rate in the country or in the economy. One is the ex ante interest rate, which is the difference between nominal interest rate minus the expected inflation in the country. Second is the ex post real interest rate, which is the difference between nominal interest rate and the actual inflation in the country. तो दो इन्फ्लेशन की हमने बात की और दो ही इंटरेस्ट रेट्स की बात की, रियल इंटरेस्ट रेट की बात की इकोनॉमी में स्लाइड में, कि हमारे पास दो इन्फ्लेशंस होते हैं इन कंट्री में. वन इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, वन इज the other one is actual inflation. तो दोनों की बेस पे हम कह सकते हैं कि there are two real interest rate in the economy. Ex ante real interest rate, which is the difference between I minus pi E, and the other is the ex post real interest rate, which is the difference between I minus pi. Now we'll talk about the demand for money function. As we know that in the quantitative theory of money assumes that the demand for real balances or the demand for money depends only on the income or real income in the economy. Why पे डिपेंड करती है. जैसा कि हमने एक फंक्शन लास्ट टाइम डिटरमिन किया था. we have determined the real determine the real demand for real balances or demand for money function. We said that M over P is equal to K, Y. K is the portion of money which they hold with themselves for the demand as a demand for money, right? So we said that demand for in the quantity of money हमने ये कहा कि demand for real balances or demand for money only depends on the real income in the economy.
यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे बताने की एक और डिटर्मिनेंट है जो कि रियल डिमांड फॉर मनी को डिटर्मिन करता है इकोनॉमी का, जिस पे डिमांड फॉर मनी डिपेंड हो सकती है. सो and that is the nominal interest rates. So the nominal interest rate I is the opportunity cost of holding money instead of purchasing bond or other interest earning assets. तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बेसिकली इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं, जो कि लोग अपने पैसों को अपने पास होल्ड करते हैं, डिमांड करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं. अगर वही पैसे जो अपने पास वो होल्ड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इफ़ दे यूज़ इट फॉर द बॉन्ड और दे पुट इन द बैंक, दे विल अर्न सम इंटरेस्ट रेट अर्निंग्स, दे आर सैक्रिफाइसिंग. सो I is the opportunity cost of demand for money, the money which people hold with themselves for different purposes. Now, hence, as I increases, जब भी कभी इजाफा होता है उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस और डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पीपल वुड प्रेफर टू बाय बॉन्ड्स और पुट देयर मनी इन द बैंक इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी विद देमसेल्फ, राइट? बिकॉज इफ दे पुट देयर मनी इन द बैंक, डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, तो उस पे उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, अर्निंग्स ज़्यादा होती है, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी विद देमसेल्फ, राइट? सो वी कैन से दैट there is inverse relationship between the nominal interest rate and the demand for money, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी कम होती है, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है. सो हम दोबारा से डिमांड फॉर मनी फंक्शन को लिखेंगे एंड दैट कैन बी रिटन एज, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, M और P power D is the real demand for money is equal to function as L into I over Y. Now where M over P D is the real money demand, and that depends on negatively on I. Now there are two determinants of the real demand for money. One is the nominal interest rate, the other is the real income in the economy. Now it depends negatively on nominal interest rate. जब nominal interest rate बढ़ता है तो क्या होता है, इकोनॉमी में उसकी डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है. जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी. एंड द अदर डिटर्मिनेंट विच इज़ वाई, विच इज़ रियल इनकम, पॉजिटिवली रिलेटेड विद द डिमांड फॉर मनी विद द इंक्रीज इन real income in the country or in the economy. This will lead to increase in the demand for money and vice versa. L is here used for the money demand function because money is the most liquid asset, so we use L for the money demand function, right? So we can say that money demand is not only depending on the real income in the economy, as we found in the QTM, quantity of money, in the previous lecture, but we can say that demand for money also depends on the nominal interest rate in the economy. और हम कह सकते हैं कि money demand is a function of nominal interest rate as well as real income in the economy, जैसा कि आपको सामने स्लाइड में नज़र आ रहा है कि M over P L is equal to L into I comma Y bracket close. So M over P, our demand for money, is depending on two variables now, which is the nominal interest rate and the real income. We'll continue with the demand for money function in the coming slides, few coming slides. M over P D is equal to L I Y. As we know that nominal interest rate, जैसा कि हमने पिछली slides में देखा कि nominal interest rate is equal to the real interest rate plus inflation rate in the economy. So we can write that L into R, which is the real interest rate plus expected inflation comma Y. So when people are deciding whether to hold money or bonds, they do not know what inflation will turn out to be, right? So that's why we have used expected inflation, not the inflation here, क्योंकि जब लोग डिसाइड करते हैं कि क्या वो पैसा रखें अपने पास और बॉन्ड खरीदें या बैंक में डिपॉजिट करें,
उनको अंदाज़ा नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि इन्फ्लेशन कितना होगा, right? How much will be the inflation in the economy? So that's why we have used here R plus pi E, which is the expected inflation, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता while deciding about the money, whether they should hold it for their demand or buy purchase bonds or deposit in the bank. उनको अंदाज़ा नहीं होता कि economy में inflation कितना होगा. That's why we have used pi E, which is expected inflation, instead of using just inflation, right? Hence nominal interest rate relevant for money demand is equal to R plus pi E. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी के लिए जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है would be equal to small r, which is the real interest rate, plus expected inflation pi E, right? So equilibrium in the market would be M over P is equal to L R plus pi E comma Y, right? So the demand for money depends on the nominal interest rate, which is here equal to the real interest rate plus expected inflation and real income in the economy, right? Now, what determines what? So we'll continue with the demand for money functions. Now, as we know that there are some variables which are given, which are exogenous, and there are some variables which are determined within the model. As we know that we have the demand for money equation, which is equal to L R plus E comma Y, right? So variable, what will happen in the long run, how variable determined in the long run. So we know that M, that is the money supply, is exogenous, is given in the long run, right? Similarly, real interest rate is also given in the long run. It determines saving is equal to investment. It is determined by where saving is equal to investment, right? And real interest rate basically adjusts whenever there is a disequilibrium between saving and investment. Here the role of real interest rate comes in, and that tries to adjust the equilibrium and brings into where saving is equal to investment. तो लॉन्ग रन में हम ये कहते हैं कि मनी सप्लाई भी गिवन होती है, रियल इंटरेस्ट रेट भी गिवन होता है, जो इनकम है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इन द लॉन्ग रन वी हैव ए फिक्स्ड कैपिटल, वी हैव ए फिक्स्ड लेबर, एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी हैव ए फिक्स्ड कैपिटल एंड फिक्स्ड लेबर के बार एल बार, ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन द रियल आउटपुट और द रियल इनकम इज आल्सो गिवन, व्हिच इज वाई बार, right? So and P adjusts to make M over Y, M over P is equal to L into I over Y. So then only the variable which is left is the inflation, right? Which basically determine and the demand for money in the economy. जब हमने ये कहा कि मनी सप्लाई भी कांस्टेंट होती है लॉन्ग रन में, रियल इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट होता है, गिवन होता है, एक्सोजिनस होता है, एंड द रियल इनकम विच इज वाई इज आल्सो गिवन बिकॉज इन द लॉन्ग रन कैपिटल इज फिक्स्ड, labor is fixed. We assumed last time that capital are fixed, are given, so output will also be given. So then we can say that P is the only variable, is the only parameter that adjusts the real that adjusts the demand for money function or the demand for real balances, and we can write that the M over P is equal to L into I comma Y, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है. So how P responds to delta M? So जैसा कि हमने पीछे कहा कि long run में M, R और Y are exogenous, are almost given. So then P is the only variable that adjusts the demand for money function. Now how P responded to delta M whenever there is a change in delta and money supply? So how P responded, right? As we know that we have the demand for money function, which is written as M over P is equal to L into R plus expected inflation comma income. This is the demand for money function, just जो कि हमने ड्राइव किया. For any given value of R, Y and pi E, a change in M causes P to change by the same percentage, just like quantity theory of money. तो यहाँ पे भी जैसा कि हमने we discussed in the quantity theory of money that
whenever there is change in money supply in the economy, that will bring change in the price level in the economy. Similarly, whenever there is a change in M, P will be changed by the same percentage as we have seen in the QTM, or the quantity theory of money. Now we'll have as we know, there are two sorts of inflation. What about expected inflation, and what will happen to the expected inflation in the long run? So over the long run, people do not consistently over or under forecast inflation. So we can say that expected inflation pi e would be equal to pi the actual inflation in the economy in the long run. तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में लोग जो हैं कंसिस्टेंटली ओवर और अंडर फोरकास्ट इन्फ्लेशन को नहीं कर सकते, एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन के बराबर होता है. द डिफरेंस बिटवीन पाई ई and pi is only in the short run. So in the short run we can say that pi e may be changed when people get new information, right? When they have new information, short run may pi e could be different, or expected inflation could be different than the actual inflation in the country. So suppose we can एक एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज फेडरल और द सेंट्रल बैंक और द स्टेट बैंक अनाउंसेस इट विल इंक्रीज एम नेक्स्ट ईयर. अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ये अनाउंस कराती है कि नेक्स्ट ईयर वो मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, पीपल विल एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट ईयर जो पी है दैट विल आल्सो राइज और हायर हो जाएगा. सो पाई ई विल आल्सो राइज. तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का मनी सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि व्हेनेवर द गवर्नमेंट अनाउंसेस मनी सप्लाई टू राइज इन द इकोनॉमी, सो पीपल कैन एक्सपेक्ट, so there will be rise in the expected inflation in the country. So this will affect P also now when even through M has not changed. तो जब ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में मनी सप्लाई के बढ़ने से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो एट प्रेजेंट जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, उस पे भी असर पड़ेगा वो, क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग के लॉन्ग रन में फ्यूचर में गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाने जा रही है. जब बढ़ाने जा रही है तो फ्यूचर में प्राइसेस चीज़ों की बढ़ जाएंगी. तो प्रेजेंट में भी देयर विल बी चेंज इन द प्राइस लेवल, दैट इन्फ्लेशन इन एट प्रेजेंट can also be affected with the expected increase in money supply and with the expected change in inflation rate in the economy. So this is how expected inflation can play a role in determining the price level at present, right? So we can relate, we cannot deviate that expected and actual inflation are interrelated with each other, और जो inflation at present है और expected inflation in future, उनको भी आपस में relate कर सकते हैं आप. How P responds to delta PE. तो हमने जैसा कि कहा कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में जब चेंज आती है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में कहा, मनी सप्लाई जब अगले साल गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो देयर विल बी चेंज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, राइट? पीपल विल एक्सपेक्ट सम चेंज इन इन्फ्लेशन, राइट? दैट इज चेंज इन पाई ई, राइट? हाउ दैट चेंज कैन respond, how P respond to that change. So that's what we are going to see here now. As we know that उसी तरह हम start करेंगे from the demand, money demand function से. जैसा कि हमें पता है, we have a demand for money function M over P is equal to L R plus pi E Y. For a given values of R, Y and M, whenever there is increase in the expected inflation rate, this will bring a change in nominal interest rate, I, the Fisher effect. जैसे कि हमने फिशर इफेक्ट में देखा कि अगर पाई whenever there is change in the expected inflation or increase in the expected inflation, तो क्या होता है फिशर इफेक्ट में? जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है, राइट? So when there is increase in the nominal interest rate, since nominal interest rate is one of the determinant of demand for money, so M over P D, which is the demand for money, वो कम हो जाएगी, right?
जब डिमांड फॉर मनी कम होगी तो इट मीन्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएगी, प्राइसेस टू मेक एमपी फॉल टू री एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। तो हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि व्हेन एवर गवर्नमेंट चेंज मनी सप्लाई इन नेक्स्ट ईयर, प्लान करती है कि मनी सप्लाई में चेंज लाएगी, हमने ये कहा कि देयर विल बी चेंज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो नाउ इन दिस स्लाइड हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ दैट change in expected inflation, how P responds to that change in expected inflation, किस तरह रिस्पॉन्स करेगी, राइट। तो जैसा कि हमने कहा कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइज होगा, इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, तो दिस विल लीड टू चेंज और इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फिशर इफेक्ट। जैसा कि हमने कहा कि फिशर इफेक्ट में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट दे हैव ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, राइट। जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और हमें अंदाज़ा है एंड वी नो दैट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी, तो M over P will go down, and then P basically increase, and P makes basically demand for money to fall to re-establish equilibrium in the market. So this is how P responds to change in expected inflation. Now the classical view, classical economists क्या कहते हैं about this change in prices? A change in the price level is merely a change in the unit of measurement. They say that, so why then inflation is the social problem? जब हम ये कहते हैं कि प्राइस लेवल जब तब्दीली आती है तो there is a merely change in the unit of measurement, in the unit of measurement, so then why we say that inflation is called a social problem, right? So अभी तक जो हमने बात की, हमने बात की about the relationship between inflation, money supply, money demand, and the relationship between nominal and real interest rate with the help of actual and expected inflation. हमने ये कहा कि इन्फ्लेशन जो अब इकोनॉमी में होता है तो ऑफ कोर्स दिस विल इंक्रीज द कंजम्पशन और रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। लोगों की परचेजिंग पावर नॉर्मली कम हो जाती है। जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मुतासर होता है। इट इफेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द इकानमी बिकॉज दे हैव सेम लेवल ऑफ इनकम ऑलमोस्ट, बट द प्राइसेस हर इंक्रीज, तो उनकी परचेजिंग। बट अगर आप दूसरी साइड पे देखें, जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यू नो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कैन आल्सो चेंज और कैन आल्सो इंक्रीज। लाइक हम लेबर की बात करते हैं तो उसकी वेज भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन इकानमी में हुआ तो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती हैं, यानी कि मजदूरों की उजरत जो है वो भी बढ़ जाती है, कैपिटल का जो रेंट इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, लैंड का जो रेंट है वो भी बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने से देयर इज़ अ मेयरली चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब प्राइसेस की तब्दीली से कोई ख़ास फ़र्क यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे नहीं पड़ता, परचेजिंग पावर पे नहीं पड़ता, तो क्यों हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ नोन एज ए सोशल प्रॉब्लम? तो दिस इज़ व्हाट क्लासिकल थिंक अबाउट कि व्हेन inflation is then when prices cannot change the unit of measurement as maximum as there is change in the prices, then why inflation is known as the social problem. The social cost of the inflation falls into two categories. दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं just to explain कि what type of social cost society has to pay if there is increase in the price level in the economy. अगर प्राइस बढ़ रही हैं क्या कास्ट है जो कि सोसाइटी को बेयर करनी पड़ेगी? वी कैन डिवाइड दैट कॉस्ट इनटू टू कैटेगरीज. वन इज द कॉस्ट व्हेन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड, राइट. एक तो ये है कि जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हों लोग तो सोसाइटी आर द पीपल हैज़ टू बेयर कास्ट, सो दैट इज़ द वन टाइप ऑफ कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज़ टू पे. सेकेंड, there are some additional cost when inflation is different than people had expected. And so two sort of cost that people can expect. One is when
the cost to the society when inflation is expected, right? Second, some additional cost when the expected inflation is different than the actual inflation that people were expecting or people had expected about that. So we'll explain these two different costs of inflation one by one in detail in the coming slides. Now first we talk about so now the overall topic for discussion is now the social cost or the costs of inflation. So जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया. First part is the cost of expected inflation. So we can give different types of social costs to the society with the expected inflation. One could be shoe leather cost. Now what is that shoe leather cost is basically when there is inflation in the economy, like the people would like to hold money less with them, right? So instead of keeping money with themselves in total for the whole month, they can put their money, deposit their money in the banks and then go to the bank at different times and to draw the money in different parts. Like instead of for example अगर आपकी income, total income जो demand for money है is 10,000 for a month, so instead of holding all these 10,000 per month with you, you can deposit this money in the bank and visit to the bank different 4 or 5 times during a month. Like कभी आप 2,000 निकलवा सकते हैं बैंक से, कभी आप 5,000 निकलवा सकते हैं, कभी 1,000 निकलवा. You have to go again and again to get money from the bank. तो इस cost यानी कि you shoe leather cost means कि when you go again and again to the bank, तो आपकी जो cost shoe leather cost means you have to bear some cost in terms of your shoes because you are running more as compared to if you draw the money at once. लेकिन this is the arbitrary, basically the cost actually basically you have to pay is that you have to go again and again into the bank. You have to sacrifice your time, you have to sacrifice your convenience. That is the cost that the society has to bear when there is inflation in the economy while holding money with themselves and in the bank. Now as inflation increases in the economy, pie increases, then this lead to increase in nominal interest rate. As we know that this is because of the Fisher effect कि जब पाई बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है. सो व्हाट विल हैपन, जब हमने ये कहा कि आई जो है इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रियल बैलेंसेस आर द डिमांड फॉर मनी. तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है. सो रिमेंबर इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन डज नॉट अफेक्ट रियल इनकम और real spending. This is the only short term. अगर कोई cost society को bear करनी पड़ती है तो that is only in the short run. In the long run, economy adjusts itself. So same monthly spending but lower average money holdings means more frequent trips to the banks to withdraw smaller amounts of cash, right? So this is one sort of cash that is known as the shoe leather cost to the society. When there is inflation in the country or in the economy. तो इसको मैं repeat करता हूँ that it is the cost and inconvenience of reducing money balances to avoid the inflation tax. तो आप inflation tax से बचने के लिए, प्राइस में जो राइज है उससे बचने के लिए आप सारे के सारे पैसे बैंक में रखते हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स में ड्यूरिंग ए मंथ आप विजिट करते हो, बैंक में आते जाते हैं. तो उससे जो कॉस्ट आपको होती है, कास्ट आप पे तो कर रहे हैं बैंक की, दैट इज़ यू आर गोइंग बैंक, यू आर स्पेंडिंग टाइम, यू आर स्पेंडिंग योर एफर्ट्स, एनर्जी आपकी ज़ाया हो रही है, right? So you can spend that time for at work or leisure or something like that. So that is the cost which the society has to pay if there is inflation in the country. That is first type of cost that the society has to bear in the economy. Second is the menu cost, social cost of inflation. The cost of changing prices. For example, print new menus. So this menu basically comes directly from the restaurant example. Whenever there is frequent changes in the price level in the economy, फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशन रेट में तब्दीली आती रहती है. जो मेन्यू है आपको दोबारा बार बार, अगर रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें तो आपको यू हैव टू प्रिंट दैट मेन्यू अगेन एंड अगेन. सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ सोशल कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज़ टू बेयर, हैज़ टू पे, इंडिविजुअल हैज़ टू पे विद द इन्फ्लेशन रेट. सो प्रिंट एंड मेल न्यू कैटलॉग्स लाइक द हायर इज़ द इन्फ्लेशन द मोर फ्रीक्वेंटली फर्म्स मस्ट चेंज देयर प्राइसेस एंड इनकर दीज कॉस्ट. तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशन में तब्दीली आती है
प्राइसेस में तब्दीली आती है, फर्म्स को उतनी ही अपनी प्राइसेस को चेंज करना पड़ते हैं, एंड दे हैव टू बेयर सच टाइप ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन. So menu cost is the second sort of. So this menu word relates basically specifically with the example of restaurant. तो इसको कहा गया है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो frequently जो restaurants हैं उनको they have to change their menus and they have to bear some cost to change or print new menus and manuals, right? So that cost basically is the social cost of inflation to the society. The third is the relative price distortions, right? So this is another sort of cost that the society has to pay, that firm facing menu cost change price infrequently. For example, suppose a firm issues a new catalog each January. As the general price level rises throughout the year, the firm's relative price will fall, right? हमें पता है कि हर फर्म जो है अपना जो मैनुअल चेंज करते हैं, जैसा कि हमें अंदाज़ा है most of the time they change once a year, that is normally January, right? But if there is a continuous increase in the general price level overall in the economy, so the firm relative prices actually fall because of that continuous increase in the price level. So different firms change their prices at different times. तो कभी कुछ फर्म जो है जनवरी में अपने मैनुअल चेंज करेंगे, कुछ फर्म अपने मार्च में चेंज करेंगे, तो दे हैव टू चेंज मैनुअल एट डिफरेंट टाइम्स, लीडिंग टू रिलेटिव प्राइस डिस्टॉर्शन. सो देयर विल बी डिफरेंस इन द रिलेटिव प्राइसेस अमंग द फर्म्स की बात करें, so different firms will be charging different prices from the customer, from the consumer, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं वो इसी तरह से कंज्यूमर से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. दे चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट टाइमिंग्स, which cause basically microeconomic influences in the allocation of resources. So that can also disturb the allocation of resources. As you know that, जैसा कि हमने कहा कि शुरू में बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. तो हमने कुछ पहले बात की माइक्रो की, अब हम मैक्रो की आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इट डिस्टर्ब द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फर्म व्हिच दे आर चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर. तो दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ cost or distortion in the relative prices in the within the firms by increase in the general price level in the economy. Another sort of social cost is the unfair tax treatment. Now some taxes are not adjusted to account for inflation. As we know that inflation, जैसा कि हमने शुरू में बात की कि inflation basically is known as inflation tax, right? This is not exactly the same type of tax as the government imposes taxes, direct and indirect taxes on the individual, on the firms, and get revenue. So this type of tax does not change the revenue of the firm, but it affects the purchasing power of the consumers, right? So consumer has to pay whenever there is inflation in the economy, they have to pay. So such as the capital gain tax. For example, इसको हम एक example के जरिए मैं आपको clear करता हूँ कि if we talk about in January 2001 you bought 10,000 worth of Starbucks stock, तो आपने $10,000 का आपने खरीदे Starbucks stock खरीद लिए, and then what happened on 12 that's the 12 of at the end of the year you sold the stock at $11,000. So how much you have earned basically, that is, so your nominal stock gains only $1,000, which is the 10% after 1 year. So आपने क्या $10,000 के स्टॉक्स खरीदे साल के शुरू में 2001 में, लेकिन जब साल ख़त्म हुआ at the end of the year you sold it at $11,000. How much you have earned on your capital? That is only $1,000, which is the 10% of the total capital. Now जब एक साल ख़त्म हुआ तो इन्फ्लेशन में जितनी चेंज आई, that is almost 10% in 2001. So your real capital gain जो है वो कितना है? 0. So that is the social cost. Basically you are not you are gaining on your capital, but when we consider that there is inflation in the country, there is inflation in the economy, then you are bearing certain cost on that also, right? तो 10% आपका कैपिटल बढ़ा और 10% ही इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ, तो आपका जो नेट कैपिटल गेन है, रियल कैपिटल गेन है, दैट इज 0. बट द गवर्नमेंट रिक्वायर यू टू पे टैक्सेस ऑन योर वन. लेकिन गवर्नमेंट ये कहेगी क्योंकि आपका कैपिटल $1,000 बढ़ गया है, यू हैव टू पे द टैक्सेस, एंड दैट इज द कास्ट दैट यू आर गोइंग टू पे. सो दिस इज नोन एज अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट, राइट? कि आपने शुरू में जो स्टॉक खरीदा किसी प्रोडक्ट का $11,000 से खरीदा, $10,000 से खरीदा,
at the end of the year you sold, you get 11,000 US dollar. How much is the total gain? That is 1,000 US dollar. तो उस 1,000 डॉलर जो आपको एक्स्ट्रा मिला, गवर्नमेंट आपको टैक्स पे करेगी. टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट. बट ऑन द सेम ईयर इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ गया, आपका जो गेन है वो भी 10% है, तो नेट गेन को आपको जो कैपिटल है वो 0 है. लेकिन बट यू आर पेइंग द कॉस्ट और द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन 1,000 कैपिटल. सो दैट इज वन काइंड ऑफ बेसिकली नोन एज द कास्ट, सोशल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन टू द सोसाइटी, जो कि पे करनी पड़ती है जब इन्फ्लेशन होता है इकानमी में. अगर प्राइसेस 10% के हिसाब से ना बढ़ती तो आपको जो सोशल कास्ट है वो आपकी कम हो जाती या ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो सकती है, राइट. सो इफ़ इन्फ्लेशन हैज़ चेंज और प्राइस लेवल हैज़ चेंज इन द इकानमी और आपको कैपिटल गेन भी हुआ है, तो यू आर बेयरिंग सम कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स विच इज़ नोन एज अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट to the individual, to the firm, to the society. So this is another cost of social cost of inflation that the society has to pay. Now there are, so we have discussed the first, जैसा कि हमने कहा, हमने सोशल कास्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया. वन इज द एक्सपेक्टेड कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सेकंड इज द एडिशनल कास्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, राइट. नो व्हाट इज दैट? So that is basically the temporary adjustment of purchasing power whenever there is inflation in the economy. So people temporarily adjust their purchasing power. Many long-term contracts not indexed but based on एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि इंडेक्स नहीं होते, कहीं लिखे हुए नहीं होते, कहीं किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं होते, बट they consider or they are based on the expected inflation in the economy. Now if suppose pi, which is the inflation, turn out different from the expected, then same gain at other expense, right. तो क्या होता है कि कुछ लोगों को फायदा हो जाता है और दूसरों को नुकसान हो जाता है, right. तो people get on the expense of, some people get on benefit on the expense of other when the expected inflation is different from the actual inflation. So जब दोनों rates different होंगे, actual और expected inflation, so some people will get benefit on the expense of other. Now for example, if we take the example of borrowers and lenders, दो हमारे पास तरह के लोग होते हैं. अगर इसकी example लेते हैं, on one side we have borrowers, on the other side we have lenders. Now if the actual inflation is greater than the expected inflation, what will happen? Then the difference between the real interest rate and actual interest rate will be less than the difference between the real interest rate and expected inflation. चलें मैं इसको I can explain for you by writing. Now suppose if we say that actual inflation is greater than expected inflation, so what is going to happen? The real difference between real interest rate and actual inflation rate will be less than the real interest rate minus expected inflation. जब ये चीज़ होगी तो what will happen? And purchasing power is transferred from lenders to buyers. So in this case, when actual inflation is greater than the expected inflation, तो purchasing power transfer हो जाती है from lenders to borrowers. So in this case, जब actual inflation ज़्यादा होगा expected से, तो borrowers को फायदा हो जाता है. And similarly, if pi, which is the actual inflation, is less than expected inflation, so what will happen? This is r minus pi will be greater than r minus pi e. So in this case, the purchasing power will be transferred from the borrowers to the lenders. So here in this case, the person who is lending the money, he will be in benefit, right. So this is sometime known as the additional cost of unexpected inflation. आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने suppose if you expected कि 5% inflation होगा, but the actual inflation at the end of year is different what you have expected. So if there is difference in the actual and expected inflation, so then there has some cost which the society has to pay, और कुछ लोगों को फायदा हो जाता है at the expense of other. जैसा कि हमने इसको explain किया एक एग्जाम्पल के जरिए borrowers और lender को हमने कहा, और हमने ये कहा कि अगर actual inflation expected से ज़्यादा होगा तो in this case purchasing power will be transferred from lenders to borrower, तो इसमें borrowers को फायदा होगा. And if that actual is less than the expected, in this case the purchasing power will be transferred from borrowers to lender, और lender को फायदा हो जाएगा. So this is how the society can bear cost, additional cost, if
that there is a difference between the actual and expected inflation in the country or in the economy. And sometimes it is also possible, it is also due to the increased uncertainty. तो जब हम कहते हैं कि we don't know what would be the actual inflation, तो this basically leads toward the increase in uncertainty in the economy. So when inflation is high, it is more valuable and unpredictable. Pi turns out different from pi more often. तो अक्सर यही होता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्राम दी एक्चुअल इन्फ्लेशन. तो जब डिफरेंट होता है तो सोसाइटी को कोई ना कोई कास्ट, कोई ना कोई प्राइस बेयर करनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है. दैट इज नोन एज द सोशल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन. एंड द डिफरेंस टेंड टू बी लार्जर, दो नॉट सिस्टमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर विल बी लार्जर सोशल कास्ट, राइट. So this is known as one type of additional cost to the society, right? So this creates higher uncertainty which makes risk averse people worse off. ऐसे लोग जो रिस्क से बचना चाहते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, जो रिस्क अवर्स हैं, वो भी वर्स ऑफ हो जाते हैं. कि जब डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो ऐसे लोग जो कम रिस्क लेते हैं लेकिन वो लोग भी वर्स ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट वुड बी द एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड वेदर देयर इज डिफरेंट, वेदर इट वुड बी सेम, डिफरेंट, हायर और लोअर. सो दैट डिफरेंस बेसिकली मेक द पीपल हु टेक लेस रिस्क वर्स ऑफ इन द इकोनॉमी. नाउ अभी तक तो हमने बात की कि देयर आर लॉट ऑफ सोशल कास्ट और द कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज बैड इन द इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम there is one benefit of inflation also. And what is that benefit? What is that advantage that economy has when there is inflation in the economy? As we know that nominal wages are really reduced in the economy. Nominal जो wages होती हैं मजदूरों की, labor is one of the factor of production. अब जिसको reward जो मिलता है it is in terms of wages, that is the nominal wage. और वो बहुत कम chances होते हैं कि economy में कम हो. Normally जो नॉमिनल वेजेस हैं वो बढ़ती हैं, ज़्यादा होती हैं. सो इवन व्हेन द इक्विलिब्रियम रियल वेज फॉल्स, अगर रियल वेज कम भी होती है तो नॉमिनल वेजेस में कमी नहीं आती, नॉर्मली इंक्रीजिंग साइड होता है. नाउ हाउ वी कन्वर्ट नॉमिनल वेज इनटू रियल वेज? सो व्हेन यू डिफ्लेट नॉमिनल वेज विच इज डब्ल्यू विद प्राइसेस, डिवाइड विद प्राइसेस, यू विल गेट द रियल वेजेस. तो ये कहा जाता है कि अगर इकोनॉमी में रियल वेजेस कम भी होती हैं तो देयर इज रेयर चांस दैट द नॉमिनल वेजेस भी कम हो. नॉर्मली रियल वेजेस, नॉमिनल वेजेस बढ़ती हैं. सो इन्फ्लेशन अलाउज द रियल वेजेस टू रीच इक्विलिब्रियम दैट लेवल्स विदाउट नॉमिनल वेज कट्स. तो इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में होता है दैट कैन इफेक्ट द रियल वेज, उससे रियल वेज तो कम हो जाती है बट नॉमिनल वेज जो है वो कम नहीं होती. इट इंक्रीज, इट गोज ऑन, वो उसी तरह चलती रहती है और उसमें इजाफा होता है. सो देयरफॉर मॉडरेट इन्फ्लेशन इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ लेबर मार्केट. तो लेबर मार्केट, जब आप ये कहते हैं कि प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन हुआ, रियल वेजेस कम होगी, बट नॉमिनल वेजेस में उस हिसाब से कमी नहीं आती बल्कि बढ़ती है. तो दिस बेसिकली स्टेबलाइज the labor market, which is the demand of labor on one side, the other side is the supply of labor, right? तो when nominal wages are increased तो लोग ज़्यादा सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कम होती है. तो दिस ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. तो लेबर मार्केट जो फंक्शनिंग है वो बेहतर हो जाती है. तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि लेबर मार्केट को फंक्शनिंग को बेहतर करता है. और जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि हमने ये कहा कि नॉमिनल वेजेस बहुत कम चांस होता है कि इफेक्ट हों इन्फ्लेशन से. रियल वेजेस को तो इन्फ्लेशन कम कर सकता है क्योंकि हम रियल वेजेस निकालते ही ऐसे हैं कि विच इज़ दी डब्ल्यू ओवर पी, नॉमिनल वेज ओवर प्राइसेस, तो उसको कम करेगा. लेकिन नॉमिनल वेजेस कम नहीं होंगी, वो भी बढ़ जाएंगी साथ. जब वो बढ़ेंगी तो ओवरऑल जो फंक्शन है लेबर मार्केट की वो बेहतर हो जाएगी. तो दिस कुड बी नोन एज, और दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. The last topic that we are going to discuss is about the hyperinflation. In what is the situation, what is the state of affair जिसको हम hyperinflation का नाम देते हैं. Now इसकी definition ये है कि whenever the inflation rate is greater than or equal to 50% per month, तो उसको हम कहते हैं कि there is hyperinflation in the economy. कि जब इन्फ्लेशन में जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% है तो हम कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन है. नाउ ऑल कॉस्ट ऑफ मॉडरेट इन्फ्लेशन डिस्क्राइब्ड अबव बिकम
under the hyperinflation, right? So money cease to function as a store. जब hyperinflation होता है तो money भी अपना काम, और जो money के जो functions हैं as a medium of exchange, as a store of value, सारे के सारे cease हो जाते हैं, and people may conduct transaction by using products, by using barter system. तो जब inflation इतना ज़्यादा हो जाता है कि 50% जब इससे ज़्यादा हो जाए तो उसमें मनी जो है, जो एज लाइक एज वेदर इट इज पेपर मनी और गोल्ड मनी, it cease to operate its function, right? That is store of value, medium of exchange. वो भी काम नहीं करते. Then how you work, how you do exchange of, or how you make transaction, that is only with the help of barter system, in which you exchange goods for goods, right? So hyperinflation is not good state of affair for the economy. Now what causes, why there is hyperinflation in the economy? What is the reason behind that? Now hyperinflation basically is caused by excessive money supply growth. जैसा कि हमने कहा शुरू में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मनी सप्लाई इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन. जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में. सो एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई, इफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रेज इट्स रेवेन्यू थ्रू प्रिंटिंग मनी, कि जब गवर्नमेंट का बजट इतना ज़्यादा डेफिसिट हो जाता है कि वो टैक्स की इनकम से या दूसरे सोर्सेज से मीट नहीं करती, पूरा नहीं कर पाती, देन they decide to print more money, more notes, right? So when they print excessive notes, excessive money in economy, so that will bring hyperinflation, or that leads toward hyperinflation in the economy. So when central bank prints money, the price level rises. If prints money rapidly enough, the result is hyperinflation, right? So this is not good situation. So if you continue printing more, so this will lead towards the state of affair of hyperinflation, and inflation will be greater than or equal to 50%, and in that case money will cease its function. Then you have to trade or make transaction by the help or with the help of barter system. मैंने आपको बताया था barter system, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो अगले हमें ओपन इकोनॉमी पे लेक्चर्स पे हमने बात करनी है कि barter system जो है पुराने ज़माने में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग ट्रांजैक्शन करते थे, एक्सचेंज करते थे goods with other goods, right? And they make transaction with the help of barter system. So dear students, this is all about so little bit more why governments create hyperinflation. करते क्यों हैं? रीज़न तो हमने डिस्कस कर ली कि रीज़न है एक्सेसिव मनी ग्रोथ की, लेकिन वाई गवर्नमेंट नीड्स टू डू दैट, जैसे कि मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होती कि अपना रेवेन्यू बढ़ा सके टैक्स के ज़रिए या किसी और जरिए और किसी और सोर्स के ज़रिए, तो गवर्नमेंट के पास दे हैव नो अल्टरनेटिव टू प्रिंट मोर मनी इन द इकोनॉमी, राइट? सो व्हेन देयर इज़ नो ऑप्शन, नो अल्टरनेट अवेलेबल विद द गवर्नमेंट टू रेज इट्स रेवेन्यूज except printing money, so then that would become a reason for printing more money of or hyperinflation की reason बन जाती है. So in real world this required drastic and painful. Normally अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो ये कि अपने एक्सपेंडिचर कम करे, they should use fiscal policy instead of using monetary policy. As we know that there are two demand management policy, दो तरह की पॉलिसी इकोनॉमी में होती हैं. One is the monetary policy, the other is fiscal policy. अगर गवर्नमेंट एक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेगी, एक्सेसिव मनी ग्रोथ करेगी, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा. गवर्नमेंट को चाहिए ये कि अगर उसने अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकती, पैसे ना प्रिंट करे, मनी ना प्रिंट करे, क्या करे? दे शुड कट देयर एक्सपेंडिचर्स, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दे शुड रिड्यूस. दे शुड आल्सो अडॉप्ट फिजिकल पॉलिसी साइड बाय साइड, एंड इफ दे आर गोइंग टू प्रिंट मनी आल्सो. सो अगर पैसे कम, इफ दे प्रिंट लेस मनी एंड कट देयर एक्सपेंडिचर, तो दे कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड रिड्यूस इन्फ्लेशन टू द नॉर्मल लेवल, राइट? सो द रियल in practice and in real situation, गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. तो दिस इज ऑल अबाउट जो कि आज हम सीखना चाह रहे हैं. सो आई विल ट्राई टू समराइज सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे. We started to discuss the nominal interest rate. As we said that the nominal interest rate is equal to the real interest rate plus inflation in the economy, and with the help of this equation we have explained that जो real variable होते हैं long run में वो तब्दील नहीं होते, और हमने ये कहा कि there is one-to-one relationship between nominal interest rate
and inflation in the economy, and this one-to-one relationship is known as the Fisher effect. अब जब nominal interest rate बढ़ता है तो inflation भी बढ़ जाता है, तो this relationship between nominal and inflation is known as the Fisher effect. Now उसके बाद हमने ये कहा कि this nominal interest rate basically is the opportunity cost of holding money with themselves, and then we have talked about the money demand फंक्शन. हमने ये कहा जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि मनी डिमांड इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द रियल इनकम इन द इकानमी. यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ऐड किया. हमने ये कहा कि देयर इज़ अदर डिटर्मिनेंट ऑफ मनी डिमांड विच इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. तो हमने वी हैव री रिटर्न द मनी डिमांड फंक्शन एंड वी सेड दैट money demand function MD is a function of I, which is nominal interest rate, and real income in the economy. So MD not only depends on real income in the economy but also depends on nominal interest rate in the economy. और हमने ये कहा कि जो मनी डिमांड है नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है. अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी डिमांड कम होती है, और अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मनी डिमांड बढ़ जाती है. बट मनी डिमांड हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द रियल इनकम इन द इकानमी. जब रियल इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ती है एंड वाइस वर्सा. उसके बाद हमने बात की वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट आर द पॉसिबल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सोशल कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट की बात की. हमने कहा कि देयर इज शू सेल कास्ट और शू लेदर कास्ट वन, जिसको हमने एग्जांपल दी कि इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी विद देमसेल्फ दे पुट देयर मनी, डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक. बार बार बैंक जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, उनका टाइम ज़ाया होता है, इनकन्वीनियंस होती है, तो उसको हमने कास्ट का नाम दिया. प्रिंटिंग ऑफ मेन्यूज़, मेन्यू कास्ट का हमने नाम दिया. उसके बाद हमने अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट की बात की कि आप कुछ एसेट्स खरीदते हैं, एक साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है, बट एट द सेम टाइम जितना प्रॉफिट होता है उतना इन्फ्लेशन होता है, तो ज़ीरो नेट गेन्स, बट you have to pay certain tax to the government. तो unfair tax treatment could become a cause of, become a cost of inflation. तो उसके बाद हमने कहा कि there is a term hyperinflation, and what is hyperinflation, जिसको हमने define किया कि whenever pi inflation is greater than or equal to 50%, that is state of affair is known as the hyperinflation in the economy. उसके बाद हमने discuss किया कि why there is hyperinflation, how it can how an economy can counter with this hyperinflation, किस तरह इसको कम कर सकते हैं. तो हमने ये कहा कि instead of printing excessive money supply in the economy, they should cut down their expenditure, they should use fiscal policy side by side monetary policy. तो जब दोनों पॉलिसीज इकट्ठी यूज़ करेंगे, एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, थोड़ी सी मनी सप्लाई भी बढ़ाएंगे, तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा इकानमी में नहीं होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज स्टूडेंट. तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं. टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.